तो बच्चों अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। सो definition of moment of a force about a point is, we'll say, it is product of the force and perpendicular distance of the perpendicular distance of line of action of the force action of the force to the point so it's basically, definition is that you have to multiply the force and perpendicular distance between the line of action of force and the point. So this is the definition. Now we are moving on. Determine SI base unit for moment of a force. Here determine means you have to bring it. You have to basically prove it. Otherwise, if they say state, so we'll just write. But they said determine. Determine means we have to show it. We have to show working for that as well. Moment of force is force into perpendicular distance. Base unit of force is, as you know, kilogram meter second minus 2, and unit of perpendicular distance is meter. So on simplification, it becomes kilogram meter square second minus 2. So it's kilogram meter square second minus 2. This is base unit of moment of a force. Now this is the question. This question is about a fishing rod AB. So AB is a fishing rod. Acha, a fishing rod AB made from the rod AB is shown in figure 1.2. Now, the B part, maybe the B part is not about moment of a force. That's why it is missing. बेटा इस वर्कशीट में जो पार्ट्स मोमेंट ऑफ फोर्स के नहीं है वो हमने फिल्टर कर दिए ना, तो सिर्फ मोमेंट ऑफ जो फोर्स है उसके हमने पार्ट्स लिए हैं। तो खैर इस पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा हमें गिवन है, तो इट्स नॉट एन इशू और प्रीवियस पार्ट का यूज नहीं होगा। एंड ए ऑफ द रॉड रेस्ट ऑन द ग्राउंड, एंड ए जो है वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, एंड स्ट्रिंग इज अटैच टू अदर एंड बी। A sport stick exerts a force perpendicular to the rod at point C. The weight of the rod acts at point D. The tension in the string in a direction perpendicular to the rod. The rod is in equilibrium and inclined at angle 56 degrees to the vertical. So angle is 56 to the vertical. It is given here. The forces and the distances along the rod are shown in figure 1.2. Show that the component of the weight that is perpendicular to the rod is 4.3 Newton. We have to prove that the component of the rod that is perpendicular, the component of the weight that is perpendicular to the rod is 4.3 Newton. Basically, we have to resolve the weight. Now, we will draw a simplified version of the drawing. This is point A, this is point B. And then we will draw the weight. Weight is vertically downwards. Weight of the rod is 5.2 newtons. And this angle is 56 degrees. Now, if we draw components of weight, we have two components. A component that is along the rod, a component that is perpendicular to the rod.
The component that is along the rod is 5.2 cos of 56 degrees. This is the component along the rod. And component of the rod that is perpendicular to the rod is 5.2 sine of 56 degrees. The component that is with the angle is cos. The component that is on the opposite side of the angle, this is the opposite side. So if this is the angle, then this is with the angle and it will be cos. The one that is on the other side will be sine. So they are asking about the perpendicular one. So it's 5.2 and sine of 56. So 5.2 sine of 56 is, if we use calculator, 5.2 into sine of 56. Calculator should be in degrees. It is, my answer is 4.31099. This is the answer given by the calculator, 5377 Newton. So first you should write the full answer given by the calculator. Then you should round off according to the significant figures of the given data. So 5.2 is given up to two significant figures. And up to two significant figures, this will be 4.3 and newtons. By taking the moments about A of the rod, calculate the tension. So now we have to take moments about A and we have to calculate the tension. One thing, this force of 4.6 Newton, if we call that force F, is already perpendicular to the rod. The forces which are perpendicular to the rod are not needed to be resolved. In total, we have three forces that are acting on the rod and generating the moment. However, there is a fourth force as well. The fourth force will be at the pivot A. Basically, we have four forces in total. However, we will ignore one of the forces because it's passing through the pivot. तो आसान जबान में यूं कह लें कि जो फोर्स पॉइंट ए पे लगेगी उसको मोमेंट की कैलकुलेशन में अगर ए को पिवट लेंगे तो इग्नोर कर देंगे, बाकी सब फोर्सेस काउंट करेंगे. अच्छा, अब टेंशन का जो मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, एफ का जो मोमेंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और जो वेट का मोमेंट होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज. सो बेसिकली एफ का मोमेंट अबाउट ए क्लॉकवाइज, वेट का मोमेंट अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज, और जो टेंशन का मोमेंट है वो होगा क्लॉकवाइज, सॉरी वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है ना एरो, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज. अब रूल क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम जो है इट विल बी इक्वल, और W का डिस्टेंस क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है तो W के हम कंपोनेंट्स यूज करेंगे. W का एक कंपोनेंट ये हो गया, हम टू द स्केल नहीं बना रहे, बस रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं. W का दूसरा कंपोनेंट ये हो गया जो कि होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड. सो दिस इज 5.2 cos 56 and this is 5.2 sin 56. ये हो गया. अच्छा, 5.2 cos 56 का मोमेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पिवट ए. सो वेट की अगर हम बात करें तो वेट के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, पहली बात वेट को रिजॉल्व क्यों किया है? वेट को इसलिए रिजॉल्व किया है कि गिवन जो वेट है और जो गिवन डिस्टेंस है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है. सो बेसिकली जो वेट की लाइन है वो यहाँ पे है जो कि 1.2 मीटर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है. तो हम क्या यूज करेंगे? वेट के कंपोनेंट्स. तो अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. और एग्जामिनर ने हमें कहा है कि पिवट लो ए को, हम पिवट अब अपनी मर्जी से नहीं ले सकते. अबाउट ए, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज
मोमेंट, तो ये इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले क्लॉकवाइज मोमेंट है एफ की वजह से, एफ है 4.6 न्यूटन, और एफ ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्टेंस होगा 1.2 प्लस 0.6 यानी कि तकरीबन 1.8 मीटर फ्रॉम द पिवट। और इसके साथ जो है ये क्लॉकवाइज है ना, और कोई क्लॉकवाइज मोमेंट नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे। तो टेंशन जो है वो भी है परपेंडिकुलर, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो है 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6। बेटा ये डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, और प्लस हो जाएगा इसमें डब्ल्यू का ऑब्वियसली हम साइन कंपोनेंट यूज करेंगे बिकॉज दैट इज द परपेंडिकुलर वन। डब्ल्यू साइन 56 डिग्रीज एंड मल्टीप्लाइड विद 1.2 एंड मीटर्स। बेटा हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.6 इंटू 1.8 इक्वल्स टी इंटू 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6, ये 2.4 बन रहा है, प्लस W है जी हमारे पास 5.2 न्यूटन साइन ऑफ 56 इंटू 1.2। अब अगर हम T को बना दें सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा 4.6 इंटू 1.8, ये हमने ये वाला लिख लिया। अच्छा फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा ना जो वेट का मोमेंट है, इसमें से माइनस होगा 5.2 साइन 56, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 के साथ, और ये ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2.4 के साथ। तो एज अ रिजल्ट अगर हम आंसर निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.6 इंटू 1.8, ये हो गया 4.6 न्यूटन का मोमेंट। इसमें से माइनस होगा वेट का मोमेंट जो कि होगा ये 5.2 साइन ऑफ 56, और ये सब कुछ डिवाइड होगा 2.4 के साथ। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1.2945 न्यूटन। कैलकुलेटर जो आंसर देगा उसको आप एज अ होल लिखेंगे, और फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑब्जर्व करके राउंड ऑफ करेंगे। सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट डेटा इज गिवन अप टू 2 significant figures. If we write tension up to 2 significant figures, it's 1.3 Newton. So the tension is 1.3 Newton. So this was the question. Let me check the answer for tension. It is 1.3. Okay, bachcho, take care.